सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल प्रवानी अनेजा ते इस बुलेटिन तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। खबरों वाल रुख करन तो पहले एक नज़र हेडलाइंस से। ओंटारियो सरकार ने पेश किया बजट, साल 2018 का बजट होया पेश। ओंटारियो बजट ते सियासतदानां दी प्रतिक्रिया, कैथलीन विन ने दस्सिया बैलेंस्ड बजट। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा ने वधाई फीस, विद्यार्थी उतरे सड़कों पर। ट्रंप किम नाल मुलाकात का कर रहे हैं इंतजार, किम तो परमाणु हथियारों को तबाह करने की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र ने की सऊदी हमले की निंदा। वेनेजुला की जेल में लगी अग, 68 लोगों की हुई मौत। हुण रुक करते हैं मुख खबरों वाल। देश के सूबे ओंटारियो की सरकार वालों वित्ती साल का बजट पेश कर दिता गया। वित्त मंत्री चार्ल्स सौसा वालों यह बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने तो पहला अपने संबोधन की शुरुआत करदਿਆਂ कहा कि मिस्टर स्पीकर, मैं ओंटारियो के साल 2018-19 का बजट पेश करने की आग्या चाहना। एक अगाऊ बजट जो साडी बीते दियां सफलतावां ते निर्भर करता है। एक बजट जिस बारे सारे ओंटारियो वासियों लई सांझे मौकों का राह दर्शाया गया। एक बजट जो रणनीतिक निवेश करता है, नौकरियां और आर्थिक विकास को आकर्षित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मैं सदन को चेते कराना चाहांगा कि साडे लोकां ने प्रतिभा और लचकता कारण और ओंटारियो के इंजन को चलाउण वाले सख्त मेहनत करने वाले औरतां और पुरुष दा धन्नवाद। साडी आर्थिकता वध रही है, सारे G7 देशों तो बेहतर हुई है। इत्थे तक कि साडी बेरोजगारी दर लगभग 2 दहाकियां में सब तो घट हुई है। Mr. Speaker, I rise to present the 2018 Ontario budget, a budget that builds upon our past successes, a budget that charts a path to shared opportunity for all Ontarians, a budget that makes strategic investments, helping attract jobs and economic growth, helping shoulder the burden of those struggling to make ends meet, helping families to care for their children and their parents, to ensure that everyone can reach their full potential. People like Ranisha. I've learned about Ranisha and her family through her college professor. He wrote to us and said, and I quote, "It occurs to me that people in government who make good public policy often don't get to see the successful results." So he wanted to share the success of his student Ranisha, and it's an extraordinary story of a woman. But first, Mr. Speaker, I'd like to remind the House that thanks to the talent and resilience of all of our people, and thanks to the hard-working women and men who keep the engine of Ontario running, our economy has been growing better than Canada, better than all G7 nations, and our unemployment rate is the lowest it's been in almost 2 decades. The majority of the 800,000 net new jobs created since the recession are full-time and in the private sector and above average wages. Last year alone, 500 net new jobs were created every single day in Ontario, and our debt to GDP has fallen steadily, lowering the burden of what would otherwise have been passed on to future generations. In the year 2000, we were paying about 50.5 cents of every dollar of revenue to service our debt. This year, we'll pay 8 cents. And that's the lowest it's been in 25 years. And thanks to this improved economic growth, combined with our government's strong fiscal management, we have eliminated the provincial deficit steadily, exceeding our fiscal targets each and every year since 2009. I announced last year that we would eliminate the deficit this year entirely, and I am pleased to report that we have balanced the budget in 2017-18. In fact, we now have a surplus of over $600 million this fiscal year. उधर दूजे पासे वित्त मंत्री चार्ल्स सौस वालों पेश किए गए ओंटारियो के साल 2018-19 के बजट से ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासतदानां वालों प्रतिक्रिया आई है। प्रीमियर कैथलीन विन ने इस वित्ती बजट ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ।
No, you know what this is about is recognizing that having balanced the budget, which we've done, and we've worked very hard to do that, at the same time as we made investments, because we put OHIP Plus in place, for example, so kids get free prescription medication. But people are saying to us that they need more. They need more. Although, you know, we have a publicly funded education system and a publicly funded healthcare system that we all pay for. We have an agreement among ourselves that that's important. And this child care investment is about making sure that women can get into the workforce. We're never going to close the gender wage gap. We're never going to realize the economic productivity that comes from women in the workforce unless they can find child care. And you know, we have put in place 100,000 child care spaces. We're building those. We made that commitment last year. Well, I don't know. I don't know whether it is, but it is a response to what people have said they need. Doug Ford and I have a very different worldview. You know, we have very different perspectives on the reason for government, and government existing to, and in my mind, existing to do the things that we can't do by ourselves. And so we're responding to people's need for the ability to care for each other and care for themselves, and that's what this budget is about. Doug Ford wants to cut and let people fend for themselves. It's a very different worldview. It's amazing how they promise billions of dollars for children that haven't even been born. They're promising people that haven't even been born. I'm surprised that the finance minister and the premier are up here saying, we're giving away free cars. We're going to pay your mortgage. You get a free car, you get a free car, you get a free car. That's next on their agenda. I can assure you, when we go in there, we're going line item by line item. There's hundreds and hundreds of programs throughout this province, and every single program will be reviewed. Kathleen Wynne's final budget falls way short of the hype and way short of what Ontarians need. This is not universal pharmacare. This is not universal dental care. ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਲਥ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੰਟਰ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਟੈਰਪਿਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੀਕ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਟੈਰਪਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਟੈਰਪਿਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਘਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਰੀਨਾ ਬੈਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ 3.14% ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ 3 ਖਰਚੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ $1500 ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। The main issues are the cost increases. These decisions were made assuming the government was giving no funding, and we learned last week that the provincial government is in fact increasing our backfill funding. I can say that I share the students' frustrations. We don't have a clear understanding of what the U of A's financial picture is, and so especially given the fact that we've increased their operational grant by 2% this year. उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि इस गल की संभावना है कि उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता किम जोंग उन परमाणु हथियारों को तबाह कर देंगे, पर उन्होंने जाणू कराया कि प्योंगयांग ते ज्यादातर पाबंदियां अते दबाव बरकरार रहना चाहिए है। ट्रंप का बयान अजिहे समय में आया जदों किम ने चीन की यात्रा खत्म की है। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाल मुलाकात करके कहा कि वह परमाणु हथियारों को हटाने लई प्रतिबद्ध हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन ने किम की यात्रा के संबंध में प्रशासन को जानकारी दी है और जोर दिता कि उत्तर कोरिया ते ज्यादातर दबाव बनाया जाए कि अमरीका की नीति असर दिखा रही है। व्हाइट हाउस ने दसा कि किम नाल मुलाकात तो बाद ट्रंप नूं व्यक्तिगत रूप नाल मैसेज किया सी। ट्रंप ने ट्वीट किया
ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਦਵੀਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।